Thank you so much. Once again, a very good evening to all of you. मैं शिल्पा भावना आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस बहुत ही सुंदर समागम में, जहाँ पर हम सभी लोग मिलकर इंडियन ऑयल R&D की इस स्वर्ण जयंती का जो ये समापन है उसको पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं. एंड आई रियली एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट वेलकम टू द डिग्निटरीज ऑन द डाइस, स्पेशली आवर चीफ गेस्ट टुडे, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, Shri Hardeep Singh Puri ji. We welcome you, sir. Also, we have with us Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Labour and Employment, Shri Rameshwar Teli ji. We wholeheartedly welcome you, sir. साथ ही हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. वी ऑल्सो हैव विद अस चेयरमैन इंडियन ऑयल. वी डू हैव विद अस द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली सर्कल मिस मंजू कुमार ओवर हियर विद अस. वी ऑल्सो हैव विद अस द डायरेक्टर R&D चेयरमैन इंडियन ऑयल, और साथ में हमारे साथ हमारे कुछ लीडिंग साइंटिस्ट यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर R.A. मशेलकर एंड डॉक्टर अनिल काकोडकर. तो आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं, आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे. इंडियन ऑयल R&D जो है अपने स्वर्ण जयंती के जो हमारा ये 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उस 50 वर्षों का आज एक समापन जो है उसे मना रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन ऑयल R&D अपने 51वें साल में प्रवेश कर रहा है. शगुन का साल है, हम सभी की तरफ से मंगल कामनाएं हैं, और इन मंगल कामनाओं में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, सूर्य संवेदना दीप्ति पुष्पे कारुण्य गंधने लब्धवा शुभम मंगलम कुर्यात् सर्वस्य मंगलम मंगलम मंगलम. ये 51वां वर्ष इंडियन ऑयल R&D के लिए और यहाँ उपस्थित सभी गणों के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो. So to initiate with, let us just start this evening with the nobility of lamp lightning. So I would like to request the chief guest to kindly do this nobility, and I also request Honorable MOS to join in. और साथ ही जो हमारे मंच आसीन गणमान्य है, सभी से मैं अनुरोध करूंगी कृपा करके आप इस दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग करें. आप सभी की कर्तव्य ध्वनि के साथ हम इस शुभ कार्य को निर्मल बिंदु देंगे. से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों को प्रकाश की ओर लेकर जाए और ये ज्ञान का दीपक सभी के जीवन को यूं ही रोशन करता रहे. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय द्वीपम ज्योति नमोस्तुते. तो दीप की इस ज्योति को नमस्कार करते हुए हम अपने इस कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श कर रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द डायरेक्टर R&D डॉक्टर S.S.V. Ramakumar to kindly present the welcome address. Please welcome him with your round of claps, my dear friends. Honorable Shri Hardeep Singh Puri ji, Union Minister, Petroleum and Natural Gas, Housing and Urban Affairs, Government of India. Honorable Shri Rameshwar Teli ji, Minister of State, Petroleum and Natural Gas, and Minister of State in the Ministry of Labour and Employment. Respected Dr. Anil Kakodkar ji, respected Dr. Mashelkar ji, Shri Pankaj Jain, Secretary MOPNG,
Madam Manju Kumar, Chief Postmaster General, Delhi Circle, Chairman Indian Oil, distinguished invitees, members of Team Indian Oil and its R&D Center, ladies and gentlemen. I, on my personal behalf and on behalf of Indian Oil, extend a very warm welcome to each one of you to this Golden Jubilee finale function of Indian Oil R&D Center. For us at Indian Oil and its R&D Center, this is a momentous and motivating occasion where the entire industry and academy are gathered here to congratulate us on the successful completion of 50 years of our eventful existence of this great institution. Starting our journey with the basic tenet of indigenizing the defense lubricants, Indian Oil R&D has traversed a long and arduous journey full of challenges, setting benchmarks, creating brands, and making them iconic. All along, we have been espousing and fulfilling the cause of self-reliance, the Atmanirbharta in the downstream petroleum sector. Also, we have been contributing our bit as thought leaders and influencers to various facets of emerging energy paradigm. Today, with all modesty, I can say that we have emerged as an apex energy research institute of the nation. When the performance of an R&D institution is to be assessed, the key metrics adopted the world over are what is the intellectual wealth that it has created for its parent company, and how much of it is, more importantly, translational. By those yardsticks, I can humbly apprise the august house here that Indian Oil R&D has come up in flying colors on both these benchmarks. We have the largest patent portfolio among the Indian oil and gas PSU companies, and our 56 indigenously developed technologies are fully proven and commercialized, covering 88 patent families. And most importantly, they are licensable globally too. Thus, our translational quotient is around 6%, which is well above the global average index of commercialization. In line with the clarion call given by Honorable Prime Minister of India, as India accelerates its efforts to achieve net zero goal, Indian Oil R&D assures its steadfast commitment for stewarding the unfolding energy transition in this country with all our collective and mature research prowess. I once again, on behalf of entire team of Indian Oil and its R&D Center, extend a very warm welcome to all of you. Thank you and Jai Hind. थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, जब हम इंडियन ऑयल R&D की बात करते हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये एक ऐसा धरातल है जहां पर वैज्ञानिक लगातार अनंत संभावनाओं की खोज करते हैं, और हर वो खोज केवल इसी तरफ अग्रसर होती है कि किस प्रकार लोगों के जीवन को और आसान बनाया जा सके। वैज्ञानिक हमेशा इतिहास रचते हैं, कहा जाता है ऐसा, और हम सभी ने यथार्थ होते हुए देखा भी है। लेकिन सच ये भी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इतिहास रचना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो अपना इतिहास जाने। तो आइए आप सभी लोगों को इंडियन ऑयल R&D के बारे में कुछ बताना चाहेंगे एक छोटे से चलचित्र के माध्यम से। वी हैव एन ऑडियो विजुअल अबाउट इंडियन ऑयल R&D। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द सेम। ऊर्जा जब जुड़े विचारों से तो बन जाती है इनोवेशन। ऊर्जा जब जुड़े अवसरों से तो बन जाती है रोजगार। ऊर्जा जब जुड़े आशाओं से तो ले लेती है सपनों का रूप। और जब ये जुड़े मजबूत इरादों और प्रयासों से तो बन जाती है ऊर्जा सृजन की, जिससे पिछले 50 सालों से भरा हुआ है हमारा हर एक प्रयास। हम हैं इंडियन ऑयल का अनुसंधान एवं विकास केंद्र। इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र की शुरुआत 50 साल पहले हुई थी, जब भारत 1971 के युद्ध के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और तकनीकी अभाव से गुजर रहा था, जिससे उबरने और स्वदेशी तकनीक की खोज के उद्देश्य से
इंडियन ऑयल ने स्थापना की अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की। लक्ष्य था नई तकनीक के माध्यम से हर दिन कुछ नया इनोवेट करना, जिसके लिए निरंतर प्रयास किए गए। नए विचारों की ऊर्जा को रिसर्च और डेवलपमेंट से जोड़ा गया, जिससे देश के रक्षा क्षेत्र को पेट्रोलियम ऑयल ल्यूब फील्ड POL में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया। भारत के एकमात्र ल्यूब्रिकेंट सुपर ब्रांड सर्वो के माध्यम से 8000 ल्यूब फॉर्मुलेशन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया गया। इसके अलावा इंडियन ऑयल R&D द्वारा हुआ देश में ही डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज इनमैक्स, ऑक्टामैक्स, अन्य रिफाइनरी टेक्नोलॉजीज, इंस्ट्रूमेंटेड BIG और ड्रैग रिड्यूसिंग एडिटिव जैसी पर्यावरण के अनुकूल अत्याधुनिक तकनीकों का विकास भी, जिनका उपयोग देश विदेश की रिफाइनरीज में स्वच्छ ईंधन के उत्पादन में किया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को जबरदस्त समर्थन मिला है। फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए भर दिया इरादों को विश्वास की ऊर्जा से और BS6 फ्यूल अपग्रेडेशन और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, कैटलिस्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली हर समस्या को दूर कर इनोवेट की गई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखते हुए HCNG, एथेनॉल और मेटल एयर बैटरी जैसे ऊर्जा स्रोतों और जैविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन बेस्ड तकनीक, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन जैसी तकनीकों पर काम शुरू किया गया। इनोवेशन के मजबूत धरातल पर खड़े इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने देश के लिए जबरदस्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सृजन किया है। आज ये केंद्र 1500 पेटेंट्स का बेहतरीन आयाम पार कर चुका है, जिसमें 950 से अधिक इंडियन और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट और 200 से ऊपर US पेटेंट्स शामिल हैं। अब इंडियन ऑयल का अनुसंधान एवं विकास केंद्र एक ऐसे पड़ाव पर है जो भारत की ऊर्जा यात्रा की दिशा ही बदल देगा और इस क्रांतिकारी कदम द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन के पंख होंगे और भी मजबूत। 3200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फरीदाबाद स्थित 65 एकड़ भूमि पर इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र का दूसरा कैंपस तैयार किया जा रहा है, जिसमें होंगे 4 अत्याधुनिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी एंड कोरोजन रिसर्च के क्षेत्र में, ताकि पिछले 50 सालों से चला आ रहा इनोवेशन का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, भारत की ऊर्जा यात्रा की दिशा बदल सके और देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देता रहे। इंडियन ऑयल का अनुसंधान एवं विकास केंद्र 50 वर्ष रचनात्मक सृजन के। वाकई में यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो पेड़ पर बैठा हुआ पंछी होता है उसे कभी भी टहनी के टूट के गिर जाने का डर नहीं होता, क्योंकि उसे टहनी पर नहीं, पेड़ पर नहीं, बल्कि अपने पंखों पर विश्वास है कि वो उड़ जाएगा। इसीलिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है और इस आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से चरितार्थ करता है इंडियन ऑयल R&D। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बनती है। और जब हम इंडियन ऑयल की बात करते हैं तो कहा जाता है ना, वी ऑलवेज नीड टू हैव अ लीडरशिप, जहां पर जो हमारे लीडर हैं वो हमें कोई भी कार्य करने के लिए जब प्रेरित करें तो साथ में हमें ये भी बता सकें कि ये कैसे किया जाएगा। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से ना दैट अ लीडर इज द वन हु नॉट ओनली शोज द वे, ही ऑल्सो गोज द वे। सो वी हैव विद अस दैट कैप्टन ऑफ आवर शिप. Yes, we have with us the chairman of Indian Oil, and I would like to request him to address this gathering. Please put your hands together for him, Mr. Shrikant Madhav Vaidya. I welcome you, sir. Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri ji, Honorable Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Labor and Employment,
Sri Rameshwar Teliji, Padma Vibhushan, Dr. Anil Kakodkar ji, Padma Vibhushan, Dr. R.A. Mashelkar ji, Secretary MOPNG, Sri Pankaj Jain ji, Chief Postmaster General, Delhi Circle, Ms. Manju Kumar, Director R&D, my members of the Board of Indian Oil, distinguished guests, and fellow IOCNs. Ladies and gentlemen, good evening. The Indian Oil R&D's Golden Jubilee landmark is a momentous occasion, not just for Indian Oil, but for the entire Indian energy fraternity. Thanks to the vision of the early leaders of Indian Oil R&D, many of whom are present here today, Indian Oil could build up a basket of products and technologies, thus imparting the much-needed business edge to the organization and enhancing the self-sufficiency index of the country at large. The journey of this center commenced in 1972 with the nationalistic mandate of indigenizing the lubricant formulations to cater to our defense forces. Since then, India's most popular lubricant brand, Servo, bears testimony to the unmatched excellence, focus that it has driven the research outreaches of this center-right from the word go. Today, Servo enjoys the most preferred brand status in the country, with products catering to all perceivable automotive, industrial, and defense requirements. Moreover, a robust IP ecosystem with more than 1,500 patents filed so far with a very healthy commercialization rate is a testimony of the commercial focus of R&D activities at Indian Oil. Our R&D is also a stewardship in startup initiatives with a unique mentoring mechanism by process owners from within the organization. This unique model is already paying rich dividends in the form of co-owned IP wealth generation, which stands at 39 patents and 6 copyrights. Many of these startups are being supported by Indian Oil for scaling up into commercial ventures. Indian Oil R&D's most enduring contribution has been to strengthen the prospects of an Atmanirbhar Bharat, especially in competitive licensor controlled areas dominated by the MNCs. Today, we have patented technologies to set up major refinery processes indigenously, including the FCC InMax technology, catalysts, diesel hydrotreating, and many more. Indian Oil R&D has been the leading force in the country as far as differentiating the commodity fuels is concerned. Products such as high-performance 100-octane gasoline, XP100, high-octane gasoline, XP95, the nano-cut LPG and additized LPG for high-temperature and metal-cutting industrial applications, and extra Tej, differentiated LPG with nano-additives for commercial and industrial applications, are path-breaking products that have substantially altered the customer experience with low-carbon and energy-efficient products. And now, Team Indian Oil R&D is stewarding India's green mission forward by pioneering solutions set to strengthen India's Urja Atmanirbharta. R&D's efforts to develop and indigenize 2G ethanol, biomethanation, and gasification technologies hold special significance for a country like ours. Crucially, the Sustainable Development Goals and our commitment to carbon neutrality and sustainable energy solutions will depend upon the R&D innovations and interventions in the sunrise areas of alternate and renewable energy. The groundwork for this transition is being laid through initiatives for plastic neutrality, green hydrogen, fuel cells, battery storage devices, solar and gasification technologies. More importantly, Indian Oil R&D is shouldering the national mandate of ushering in a hydrogen economy in the country. With its state-of-the-art facilities, our R&D center is churning out cutting-edge solutions in electrolyzers and fuel cells. Our association with academia is poised to bring in commercially viable storage solutions, one of the critical enablers towards realizing the goal of the hydrogen ecosystem. Moreover, the 15 fuel cell buses that will operate from R&D Center will generate vital data for the indigenization and localization of these sophisticated technologies. As the leader of the Indian Oil family, I am proud to say that the solar cooking set that will be unveiled today reflects how our business strategies always align
with our national priorities. The cost of the product is extremely attractive. However, to reach the masses, we will seek government assistance through an effective mechanism like PM Kusum Yojana for enabling its penetration further. The mantra of Pehle Indian, Fir Oil will continue to drive the spirit of excellence for IndianOil R&D. As the second IndianOil R&D campus is coming up, many more new research dimensions are on the anvil. Thank you and Jai Hind. थैंक यू सो मच सर। और वाकई में जब हम लोग इंडियन ऑयल R&D के पिछले 50 वर्षों को देखते हैं तो हम सभी को गर्व होता है कि 1972 से लगातार सभी वैज्ञानिक मिलकर इस अनुसंधान को कर रहे हैं और इस अनुसंधान का फायदा हम सभी लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ता है, क्योंकि ये ना केवल हमारे दैनिक जीवन को सुगम बनाता है बल्कि उसके साथ साथ हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमें आत्मनिर्भरता की ओर भी लेकर जाता है। तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि जहाँ एक ओर ये वैज्ञानिक माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ अपनी इनोवेशंस को लेकर सभी के सामने आते हैं, तो वहीं जब इन इनोवेशंस का पेटेंट होता है तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी इन पर आ जाता है। जैसा कि सर ने भी अभी बताया कि हमारे ये जो इंडियन ऑयल R&D है, अभी तक इन्होंने 1501 पेटेंट फाइल किए हैं। तो मुझे लगता है दे डिजर्व राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स रियली यूनिक। और जो ये 1501 पेटेंट जो है अभी तक फाइल किए गए हैं, उसका एक साइटेशन हम लोगों ने बनाया है और हम चाहेंगे कि ये साइटेशन इसके असली ओनर तक पहुंचाया जाए। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी डायरेक्टर R&D एंड चेयरमैन इंडियन ऑयल से कि आप कृपा करके ये जो साइटेशन है हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनको भेंट करें, क्योंकि ये साइटेशन अब सरकार को समर्पित है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये 1501 पेटेंट का साइटेशन हम स्वयं सरकार को ये समर्पित कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू द रियल ओनर। और इस ऐतिहासिक क्षण में माननीय राज्य मंत्री भी हमारे साथ उपस्थित हैं और उपस्थित मंच आसीन सभी गणमान्य इस पल को स्वर्णिम बना रहे हैं। तो आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस सुंदर क्षण के लिए। We are really proud to present this patent citation to the government now. Thank you so much, sir. And now I would like to request Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Shri Pankaj Jain, to please address the gathering. May you please have a round of applause for his welcome. Honorable Minister, Petroleum and Natural Gas, Minister of State, Petroleum and Natural Gas, Padma Vibhushan Dr. Mashelkar, Padma Vibhushan Dr. Kakotkar, Shri Vaidya, Madam Manju Kumar, and Dr. Ram Kumar. It's an absolute privilege today to be here. It's really delightful. And I was just thinking about this. I think we just saw this presentation of a citation of 1501 patents, and the interesting thing is that even before the ink is dry on that document, it is in many ways outdated because the center has constantly been working and this number has already been exceeded. So it just shows that every day this number of 1501 is really going to look inadequate. So my compliments really to the team for making this happen. We are looking forward to many more milestones and many more citations about this center coming not just from India but elsewhere in the world. Because the kind of work which is happening is not simply cutting edge, it is actually defining the edge in so many ways. And that is what, it's rare to have such institutions which have been set up by industry and become a place where academia comes to. It is normally the other way around, that something is set up by academia and industry wants to go there.
but I think that is what makes the center unique, that's what makes it so special. And remember, the origins have been very humble. I mean, for a corporation which was set up in 1956, to have something very small in 1972, an early example of Make in India, we were being denied lubes from the rest of the world at a critical time. It became an existential question. To come up from there now to this level, and even as we look back, I think many of you might remember this, those old enough, when kerosene was so important in our lives for stoves, even then the Nutan stove was actually something which originated from this center. Today we can talk about NMAX, we can talk about so many other things, but somewhere to the public at large, Nutan and Servo probably epitomize what Indian Oil stood for and what the center stood for. So that again is something which is the connect which you have had with the people. Today, the next 50 years are going to probably be as exciting. Areas such as hydrogen, areas such as gasification, battery storage, nanotech, the whole idea of somebody just looking at corrosion as a subject, somebody just talking about synthetic biology as a subject. And these are things which you only read about in academic papers. But fact is that here is, as practitioners, we are trying to look at it, we are trying to resolve problems as they arise, is something which I think is extremely inspiring, not just for us, but I'm sure that when people talk of energy institutes around the world, I'm confident that the pace at which the center is moving and what it is delivering, we should be able very soon to locate them along with the best energy institutes in the world. And I wish them all the very best. We will be tracking what you're doing, we'll be watching very carefully and taking pride in what you do. Thank you very much. Thank you so much, sir. दोस्तों, कहा जाता है कि हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक, हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक, धूप में आकर तो शीशे भी निकल जाते हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे इंडियन ऑयल R&D के साथ ऐसे बहुत से हीरे जुड़े हुए हैं जो लगातार अपनी चमक से पूरे देश को रोशन कर रहे हैं। Two of them, we have them on the stage now, so one by one I'll be calling them for the address. My dear friends, firstly I would like to invite the former DG of CSIR, Padma Vibhushan, Dr. Mashelkar. Please put your hands together for him. Beloved Shri Hardeep Singh Puri ji, our Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs, Shri Rameshwar Teli ji, Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas, State Minister and Labour and Employment, Shri Pankaj Jain, Secretary Petroleum and Natural Gas, Shrikant Vaidya ji, Chairman of IOC, Dr. Ram Kumar, Director R&D, my very dear friend, Dr. Anil Kakodkar, and Chief Master General Manju Kumar ji, members of our beloved IOCL family, ladies and gentlemen, I feel very privileged to be a part of this grand celebration of a great institution. Nation is proud of your great achievements. Today is the day to applaud you for what you have done for the nation. Our Honorable Prime Minister has given a clarion call, Atmanirbhar Bharat. IOCL R&D has contributed to creating not only Atmanirbharta, but doing it with Atmavishwas, doing it with Atma Samman. Why do I say that? I've been given 7 minutes, it will take me 70 minutes to talk about what they have been able to achieve in these 50 years. But I will just say that Make in India is not just assembled in India, it is invented in India. Make in India is made in India for the world, and that's what IOC R&D has done. With this, I mentioned about the Servo brand of lubricants. This IOC's flagship
technology in Max, for example, has been licensed to overseas, winning competitive bids against some of the greatest international players. So it is competitive. It's not reverse engineering. It is forward engineering. That's what makes me proud. Let me take a couple of minutes of my personal connect. You know, I've been connected with a whole range of leaders. Many of them are here, and I can't mention them all. But a couple of incidents I remember. One is I was the chairman of the Science Advisory Committee to Ministry of Petroleum and Natural Gas almost 2 decades ago. And you know, a great organization is one which thinks ahead of time. And I always thought ahead of time. And I remember the hydrogen project started then. Now everybody talks about hydrogen. We started talking about hydrogen then, SCNG, and setting up the first hydrogen dispensing plant, sir, at that time, 2004. I'm always very happy when India is ahead of time, and that's what we have done. Also, I must say that although we talk about technological achievements, I must bring out another fashion, and that is contribution to policy. I remember 2003, I was the chairman of National Auto Fuel Policy. We had to lay out norms, you know, Euro 2, Euro 3, Euro 4 they were talking about. We were setting up BS2, BS3, BS4. And that was a big challenge at that point in time because we had to create a balance between environment, ecology, economics, and equity. And I remember Dr. Malhotra and his team, we did evidence-based analysis, science-based analysis, as a matter of fact, and give the country the roadmap. And I must give a lot of credit to the kind of inputs that we had. And I would be feeling in my duty if as Chancellor of Institute of Chemical Technology, Vaidya Sahib, I don't recognize your contribution to creating the Bhubaneswar ICT campus. And that institute is coming up very well. As you know, Institute of Chemical Technology is one of our foremost, and I'm hoping that the Bhubaneswar campus will be even better than the mother campus. This is all sort of possible. I thought I'll reflect on some of these personal anecdotes. The next point, of course, and the last point, is that we have to think of the future because that is where we are going to spend the rest of our life. And we talk about green energy. Again, our Honorable Prime Minister has set very ambitious targets for us, and I'm quite sure that IOC, as usual, have a sort of a lead role. I want to end by saying that our Indian Oil R&D has a wonderful motto. The motto is the power of possibilities. Aspirations are our possibilities, and we have to keep them high. And I'm quite sure that the combination of talent, technology, and policy basically will make all the difference. And I'm so happy to say how happy I am with the bold policies that the government is actually putting out. And that, along with the combination of talent and technology, will take us forward. After all, the 3 Ds that I always talk about, digitalization, decentralization, and decarbonization, will go together. But we have to do with speed, scale, and sustainability. And Vaidya Sahib, you were kind enough to invite me when we began the celebrations of this Golden Jubilee by giving a lecture. And you will remember I had talked about leapfrogging to pole vaulting. Frog leaves because he's afraid of the competitor, jumps a few feet. We said we must pole vault. The size of the pole is our size of our aspiration, and I can see that already happening. 25 years down the line, just like we are celebrating sort of our Amrit Mahotsav, we'll be celebrating our Amrit Mahotsav of Indian Oil. I won't be there, but I can assure you I'll be watching up from somewhere up there, seeing that how much you are contributing to building a new India of our dream with your contributions to new energy. Thank you very much. Thank you so much, sir. And now, friends, let's get ready for our next diamond to bestow his sunshine on us. So, my dear friends, please join me in welcoming Padma Vibhushan Dr. Anil Kakodkar. He is the former chairman, Atomic Energy Commission, and Secretary to Government of India, Department of Atomic Energy. Please put your hands together for him.
Shri Hardeep Singh Ji Puri, Honorable Minister, Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs, Shri Rameshwar Teli, Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Labor and Employment, Dr. R.A. Mashelkar, Shri Pankaj Jain, Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Madam Manju Kumar, Chief Postmaster General, Shri S.M. Vaidya, Chairman, Indian Oil, Dr. S.S.V. Ramkumar, Director, R&D of Indian Oil Corporation, distinguished invitees, proud members of Indian Oil Corporation's R&D community, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me to be a part of this grand finale of Indian Oil's R&D's Golden Jubilee celebrations. My heartiest compliments to all colleagues from Indian Oil R&D on this occasion. I recall my first contact with Indian Oil R&D when on the sidelines of an Indian National Academy of Engineering's meeting sometime in early 90s, Dr. P.K. Mukhopadhyay, the then Director R&D of IOCL, said to me that Atomic Energy Research Establishment at Harwell, United Kingdom, has developed an instrumented pipe inspection gauge for inspection of cross-country oil and gas pipelines. The tool is not available for buying at that time, and the charges for its use are prohibitively high. So BRC should develop one for Indian Oil Corporation, he said. That started a collaboration between Indian Oil R&D and Bhabha Atomic Research Center, culminating in a fully self-reliant capability in this critical area. More recently, I have been closely interacting with Dr. S.S.V. Ramkumar, Director R&D, on a variety of R&D programs related to clean energy transition that is currently underway. Clearly, Indian Oil R&D has become a robust R&D engine that has been providing a strong innovation and technology muscle to Indian Oil Corporation and indeed to the nation as a whole. It will be no exaggeration to say that India's refinery industry today is globally competitive, and IOCL and IOC R&D are the major contributors to this accomplishment. Whether it is technologies like INMAX, many of earlier speakers have referred to it, or INDADEPT, and many others that are already making a big impact, or technologies like 2G biofuels that are on their way to commercialization, or use of flue gases to create values through gas-based fermentation or enhanced oil recovery, or clean mobility solutions based on battery storage or hydrogen that are in various stages of demonstrations. IOCL R&D has been showing a very credible performance in the translation of research from laboratory to commercial business. Congratulations to Team IOC R&D for this commendable success. In the context of energy, India is now facing major challenges on dual fronts.
Our energy needs to realize our aspirations for a quality of life comparable to the best in the world are much larger than any other country, and the challenge is to ensure our energy security at the level of energy required in this context. On the other front, we must realize net zero greenhouse gas emission target by 2070 to ensure our very survival in the backdrop of the much talked about climate change threat. The dual challenge of ensuring the required growth as well as our survival can, in my view, be met only through a major share of nuclear energy along with renewable energy. Renewable energy narrative should thus get transformed into clean energy narrative in our energy discourse, as has happened in many other countries. IOCL R&D has major tasks cut out before it in the context of meeting growing clean energy needs of consumers in a net zero scenario. Consumers will have to be supplied with clean energy in forms that are convenient and affordable, begin with electricity from renewable and nuclear, and also high temperature heat from solar and nuclear, clean energy for cooking, both in rural and urban areas as well as for other uses in rural areas, which cannot be met by electricity, is better derived as compressed biogas or bio-CNG from biomass, which can effectively replace fossil energy while contributing to rural economy. Further, in addition to meeting growing traditional user demands that require electricity, electric mobility as well as green hydrogen needs could lead to an unprecedented increase in electricity demand that cannot be possibly coped up with solar and wind potential alone. It also seems to me that there are hard to abate energy use segments, and there we have to be inevitably dependent on the use of fossil energy duly backed up by carbon capture and utilization, as well as carbon capture, utilization, and sequestration technologies. We should therefore need a number of affordable India-centric solutions needing R&D efforts of the highest order. I am sure IOCL R&D, along with other R&D and industrial institutions in the country, would find a timely solution to these challenges. Once again, my best wishes and compliments to all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir. And now, friends, I would really like to share with you, I really feel heartified to share with you that as a part of the Golden Jubilee celebrations of Indian Oil R&D, a national school essay competition was conducted for students of classes 6 to 11 to kindle their interest in India's energy sector. इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ऑर्गेनाइज किया गया था इस essay competition को. The topics for the national school essay competition were Today's energy wastage is tomorrow's energy shortage. आज की ऊर्जा की बर्बादी, कल की ऊर्जा की कमी. ये क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे थे उनके लिए टॉपिक्स था. For the class 9 to 11, the topic was challenges in the future for oil and gas sector. तेल और गैस क्षेत्र के लिए भविष्य में चुनौतियां. I really take this pleasure to share with you that more than 1,500 essays were received from students of various schools from all over the India. So firstly, we can clap for all of them who have sent their essays.
Friends, all these essays were screened and evaluated as per the guidelines and criteria by 3-tier committees. The final evaluation was carried out by independent jury comprising of the eminent personalities for essays of Hindi and English. I would really like to take their name on. Jury for essays in Hindi, Professor Kumud Sharma, Professor Hindi Department and Officiating Director, Directorate of Hindi Medium Implementation, University of Delhi. Dr. K.K. Gupta, Principal Agrawal College, Ballabgarh. Dr. Deepak Saxena, ED/LT, IOC R&D. Dr. V.D. Gautam, CM Hindi and CC Corporate Office. Jury for essays in English, Dr. Anjan Ray, Director CSIR IIP Dehradun, Ms. Yeshi Selhi, Consulting Editor Business India Magazine, Dr. G.S. Kapoor, EDIC, CT and TPF IOC R&D, and Mr. N. Shiva Kumar, he is the former IOCM. So we can clap for all these juries. These are the final jury members in this third-tier committee. And now, my dear friends, the prize distribution for Indian Oil R&D Golden Jubilee National School Essay Competition. So we can actually clap for all these students whom I'm going to call on. I request the esteemed chief guest and honorable MOS as well to please take a step further, sir, in front of the stage so that हम उन students को आपके शुभ हाथों से felicitate करा सके. I would like to request all of you to please join in at the front of the stage. Thank you so much. Friends, let me please share with you that firstly I am going to call on the third prize winners, and the award carries the cash prize of 25,000 and the certificate. So please put your hands together. Please join me in welcoming on stage from class 6 to 8, Angela S.H. She's from English category Bishop Religious School, Nagarkoil, Tamil Nadu. Please put your hands together for her. Many, many congratulations. The next awardee is from Salt Lake School, Kolkata, West Bengal, Ivy Banerjee. Many, many congratulations. These are the young writers who are actually making the energy sector proud. The other two awardees in this category, Mr. Abhinav Kumar Pandit from Atomic Energy Central School, Jamshedpur, and Mr. Ashwini Kumar from JKGPS Vidya Mandir Inter College, Lahadpur, Uttar Pradesh. They could not attend the function, but we can actually clap for them so that we can congratulate them. And now I would like to invite the second prize winners, and the cash prize consists of rupees 50,000 and a certificate. Abhinav Ranjan, Delhi Public School, Patna, Bihar. Please put your hands together for him. Many, many congratulations. Our next second prize winner is from Cambridge School, Noida, Uttar Pradesh, Sparsh Sandeep Zalwade. Please put your hands together for the child. Many, many congratulations. बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. Our next awardee is from Adarsh Sanskar Vidyalaya, Nagpur, Maharashtra, Trupti Abhadkar. Please put your hands together for the girl. Here I would like to mention that Ms. Anushka Sinha from Delhi Public School, Patna, Bihar, she could not attend the function, but we congratulate her as well. And now I would like to call on the first prize winners. And my dear friends, the award carries cash prize of rupees 1 lakh and a certificate. Pratna Bhatt, DAV International School, Ahmedabad, Gujarat. And in this first prize, along with the cash prize, they are
got a certificate and a memento for the school. गंगा बांगे हायर सेकेंडरी स्कूल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से फर्स्ट प्राइज विनर की लिस्ट में हेमलता वर्मा। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। आइडियल पब्लिक स्कूल फरीदाबाद हरियाणा से हर्षिता विश्वास। इन बच्चों के चेहरों की चमक हमें बता रही है इनकी खुशी का अंदाजा, तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में वो खुशी दिखनी चाहिए। And next name in the first prize winner is from MVN Public School, Faridabad, Haryana, Vansh Kumar. Heartiest congratulations to the winners. बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए इन बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कृपा करके आप अपना स्थान ग्रहण करें, पर हम आपको थोड़ी थोड़ी देर में परेशान करते रहेंगे बिकॉज आज आपके आशीष के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। इन बच्चों को हौसला अफजाई होगी। जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। Sir, there was an AV also, sir. We would like to see it after that. एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ मंच पर हमारा सोलर कुकर का एक प्रोडक्ट है जिसका लॉन्च हम यहाँ मंच पर करना चाहेंगे और इसका जो अनवीलिंग है वो खुद ऑनरेबल मिनिस्टर के शुभ हाथों से होगा। सो आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इसका अभिनंदन करते हैं। आज न केवल हमारे देश के लिए बल्कि इंडियन ऑयल R&D के लिए भी और उन सभी वैज्ञानिकों के लिए गौरव का क्षण है जो लगातार कार्य करते हैं ऊर्जा अनुसंधान की ओर। और ये सूर्य नूतन, I request the dignitary to please unveil it. May you please have a round of applause, my dear friends. सूर्य नूतन अब सभी लोगों के समक्ष है जिसकी चमक हम सभी की आंखों में देखी जा सकती है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। ये क्षण जो आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, ये क्षण जो इंडियन ऑयल R&D के 50 सालों के संपन्नता का एक पूरी तरह से परिभाषा को विकसित कर रही है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए प्लीज। थैंक यू सो मच डिग्निटरीज। दोस्तों, कहा जाता है कि बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, डूबी हुई कश्ती भंवर से निकल सकती है। ए दोस्त मायूस ना हो, इरादा न बदल, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। तो ये जो हमारे सामने सोलर कुकटॉप है जिसका नाम सूर्य नूतन है, ये उन सभी की जिंदगी बदलने वाला है जो इस क्षेत्र में कहा जाता था कि सिर्फ धूप में खड़े होकर ही सोलर के जो हमारे प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इस सूर्य नूतन की मदद से आप अपनी किचन में भी पूरी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना केवल दिन में बल्कि रात में भी जब सूर्य नहीं होता। कैसे, वो हम आपको दिखाएंगे इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से जिसमें इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। तो आप सभी की तालियों के साथ इसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक अपनी ऊर्जा की जरूरतों का 50% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाए। साथ ही सभी के लिए बेहतर और
सर्वाधिक सस्टेनेबल भविष्य का मॉडल बनाया जाए। एक क्षेत्र ऐसा है जो शायद बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है, और काम ये कि बिजली से चलने वाला चूल्हा जिस पर हर प्रकार की रसोई हो सके। पकौड़ी भी बनाने होंगे तो भी हो जाए, और चपाती बनानी हो तो भी बन जाए, मिठाई बनानी हो तो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सपने को साकार कर दिखाया है इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र फरीदाबाद ने। 4 दशक पहले देश में नूतन स्टोव के बाद R&D सेंटर के गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है इंडियन ऑयल की एक और पेशकश, इंडोर सोलर कुकिंग प्रोडक्ट सूर्य नूतन। सूर्य नूतन थर्मल बैटरी से चलने वाली मल्टी मोडल हीटिंग आधारित तकनीक है। कस्टमाइज्ड थर्मल बैटरी और ऑप्टिमाइज्ड इंसुलेशन के माध्यम से यह लंबे समय तक खाने पकाने के लिए जरूरी ऊष्मा को धारण करता है। सूर्य के चमकने पर यह पूर्णतः सोलर मोड में तथा कम धूप, बिना धूप वाले और खराब मौसम के समय में यह हाइब्रिड मोड में इलेक्ट्रिक ग्रिड के माध्यम से काम करता है। इसे चलाना, मेंटेनेंस करना, बनाना और इसे इंस्टॉल करना एकदम सुरक्षित और आसान है। इस पर तलकर बनाए जाने वाले पकौड़े, भाप से पकाई जाने वाली रोटियां, भूनकर बनाई जाने वाली मिठाई और छौंककर बनाई जाने वाली सब्जी भी आसानी से बनाई जा सकती है। इस पर 4 व्यक्तियों के परिवार के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों पकाए जा सकते हैं। अगर ऐसे यूजर फ्रेंडली इक्विपमेंट तैयार होते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि लोग अपने घर में सोलर एनर्जी से चूल्हा चलाएंगे। इंडियन ऑयल द्वारा पेटेंटेड सूर्य नूतन उपभोक्ताओं को जल्द ही 3 वेरिएंट में उपलब्ध होगा। L मॉडल, इसका इस्तेमाल केवल सोलर टाइम के दौरान किया जा सकता है। लंच और डिनर के लिए LD मॉडल और लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए LDB मॉडल, जो कि सूर्य के अस्त हो जाने के बाद भी खाना पकाने में सक्षम है। इस तरह सूर्य नूतन इको फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो आने वाले दिनों में कुकिंग के लिए क्लीन और ग्रीन एनर्जी के रूप में उपलब्ध होगा। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर और वर्ष 2022 के इंडियन ऑयल कंपनी के हरित भविष्य के सृजन के विजन को साकार करते हुए अपनी स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर अनंत संभावनाओं की ये नई खोज सूर्य नूतन देश दुनिया को समर्पित है। आत्मनिर्भर होते भारत की नई उड़ान, सूर्य नूतन बनेगा किचन की नई पहचान। आजादी के अमृत महोत्सव पर इससे बेहतर भेंट इंडियन ऑयल R&D की तरफ से हो ही नहीं सकती थी। तो इस सूर्य नूतन के लिए आप सभी की तालियां बनती हैं। यहाँ मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगी कि इस सूर्य नूतन को देश के अलग अलग क्षेत्रों में पायलट टेस्ट के लिए अवेलेबल करवाया गया था। तो हमारे साथ हमारे साथ 2 हमारे उपभोक्ता जो है वो जुड़े हुए हैं, लेह से हमारे साथ जुड़े हैं और उदयपुर से जुड़े हैं। और मैं चाहूंगी कि स्वयं माननीय मंत्री महोदय जो है उनसे वार्ता करें और देखें कि किस प्रकार वो हमारे सूर्य नूतन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उदयपुर से गुड्डी देवी जी जुड़ी है हमारे साथ और लेह से श्री सोनम चेसपाल, स्वागत है आपका। आपका कैसा, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? आपका कैसा अनुभव रहा सोलर कुकर के साथ, बताएंगी? बहुत अच्छा हुआ। क्या पकौड़े बनाए थे? क्या कैसा इस्तेमाल किया आपने?
मैंने दाल बनाई, रोटियां बनाई और राजस्थानी खाना बनाया और इस पे दूध गरम करे मिठाई बनाई। मतलब मिठाई भी बना लिया बनाई। जी जी। बहुत आसान है गैस का तो। अच्छा इसको खाना भी टेस्टी बनता है सर, खाना भी। अच्छा मतलब टेस्ट में भी उसमें सुधार आ गया है। बहुत ज्यादा। एक तो अपन लो पे सेका, एक अंगीरे पे सेके तो अंगीरे जैसे इतनी टेस्ट। अच्छा इसको इस्तेमाल करने में आपको किसी की सहायता तो नहीं चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। अब बहुत आसान है, थोड़ा तरीका अलग है। पहले आज सामान रख दीजिए, उसके बाद में हल्का बना लीजिए। अच्छा इसके मैंने कल ये तो अभी आपने इस्तेमाल किया, इससे पहले आप क्या गैस पे खाना बनाती है, कैसे करती हैं? गैस पे बनाती पहले। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपको बधाई हो। और ये कंपनी वालों ने आपको ये चूल्हा दिया है कि नहीं, सिर्फ आपसे इस्तेमाल करवाया है? अब मैंने मांग तो करी थी। मांग की थी ना, तो इसलिए मैं भी सिफारिश करूंगा, इनके ये जो IOCL के अध्यक्ष हैं, ये मेरे मित्र हैं, मैं इनको कहूंगा आपको जरूर एक चूल्हा पहुंचवा दें। एक चूल्हा पहुंचवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेह से सर, लेह से श्री सोनम चेसपाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप अगर उनसे भी बात करना चाहें। थोड़ी सी कनेक्शन में मुझे लगता है कुछ अड़चन आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर जी नमस्कार सर, जुड़े सर सुनिए दे सर जी। नमस्कार नमस्कार। आप बताइए, आपने ये सोलर चूल्हा इस्तेमाल किया है खुद अपने आप? हाँ सर जी, हमने इसको इस्तेमाल किया सर, बल्कि किचन के अंदर ये बहुत अच्छा चीज है सर, ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है सर। आपने क्या इस पे कैसा इसको इस्तेमाल करके आपने क्या बनाया? सर इसमें हमने अपना लोकल डिश बनाया सर, नमक का जो पहले तो मोमो है सर, और स्टू होता है सर, पबा होता है सर, ठुब्बा होता है सर जी, और रोटी है सर। इसके अलावा दाल चावल भी हमने पकाया सर जी, और ये बहुत लाभदायक चीज है सर। आपको इसको इस्तेमाल करने में किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? आसान है इस्तेमाल करना? इसमें तो बहुत ही अच्छा सुविधा है सर, कोई किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, और ये एक बहुत ही अच्छा चीज है, किससे कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है सर। किसी भी ये LPG के बनिस्पत ये जो है ये प्रोडक्ट है, जो कुकर है सोलर कुकर, इसमें कोई किसी प्रकार का आग लगने का खतरा नहीं है सर। इसके अलावा जो LPG तो हम बार बार हमें खाली हो जाता है और लेने के लिए जाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है सर। ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, हमारा पैसा भी बचत है सर इसमें बहुत ज्यादा, और गैस का भी बहुत ज्यादा इसमें बचत जाएगा सर। ये ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल बचेगा सर, जनता का जो है पैसा बचेगा सर। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो दो बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो सुरक्षित है, और इसमें कोई गैस सिलेंडर भी अब सुरक्षित है, और उसमें भी बहुत काम हुआ है उनको सुरक्षित बनाने का। दूसरा आपने ये भी कहा कि इसमें सिलेंडर चेंज करना या बाकी जो उसको सिलेंडर को लाने में, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसको इस्तेमाल किया, और जब आपके यहाँ ये पायलट प्रोजेक्ट लगा तो IOCL के बारे उनकी तरफ से कोई ऐसा आपको मैसेज मिला कि आपको ये सिलेंडर, ये सोलर कुकर आपको प्रेजेंट करेंगे? कुछ ऐसी बात हुई नहीं हुई? हाँ सर बताइए सर, अभी देखेंगे सर, आगे सर लोग करेंगे सर। इसके अलावा सर मैं आप लोगों सर आपसे आप और आपके टीम का जो भी R&D है, जो आपके चेयरमैन साहब है, आप है सर, और सारा जो भी है इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो योगदान दिया है, वो सारे लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये जो सूर्य
ऊर्जा से जो ये हमारा जो ये कुकर सर है बहुत अच्छा है सर, और ये किचन में और बहुत ही लाभदायक है सर जी, और कभी भी इसका जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और ये इसमें मेंटेनेंस फ्री है सर ज्यादातर, क्योंकि एक बार ले लिया तो मेंटेनेंस फ्री है सर। बहुत अच्छी चीज है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप तो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको एक नहीं दो देने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ने जिस तरह से वार्ता की है हमारे उपभोक्ताओं के साथ, तो ये जो बात चल रही थी ना कि सोलर कुकर दे देंगे, तो सर ने उसको सोलर कुकर दे दिया में परिवर्तित कर दिया है। तो एक बार सर के लिए तालियां तो बनती है। And now, my dear friends, please join me in welcoming for the address Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Labor and Employment, Shri Rameshwar Teli. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा उनका। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन जी, हमारे दिल्ली सर्कुल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मंजू कुमार जी, इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्री कांत माधव वैद्य जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक R&D के डॉक्टर SSB राजकुमार जी, पद्म भूषण डॉक्टर रघुनाथ अनंत माहुलकर और डॉक्टर अनिल काकोडकर जी, यहाँ उपस्थित अतिथिगण एवं देवियों और सज्जनों, नमस्कार। सबसे पहले मैं इंडियन ऑयल R&D परिवार के सभी सदस्यों को स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के इस महान उपलब्धियों पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि 1972 में शुरू हुई इस सफर ने संरक्षण, परिवर्तन और विश्वास के मूल्यों के आधार पर इंडियन ऑयल R&D को एक प्रतिष्ठित संस्थान बना दिया है। इन्हीं ठोस मूल्यों के बल पर यह महान संस्थान देश के सभी अनुसंधान केंद्रों में एक खास स्थान रखता है और दुनिया भर में इसकी पहचान है। संभावनाओं की शक्ति के आदर्श के साथ इस केंद्र ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जैसे बड़े पैमाने पर जनता के लिए कम दर पर ईंधन और पर्यावरण अनुकूल लुब्रिकेशन की खोज कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी इंडियन ऑयल R&D की लगन एक जीता जागता प्रमाण है। नई खोज के क्षेत्र में इंडियन ऑयल R&D का पिछले 5 दशकों का सफर एक शानदार उदाहरण है। इंडियन ऑयल R&D बाजार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रहा है, अपनी विकसित तकनीकों को और उपयोगी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दुनिया भर में तकनीकी लाइसेंस देने वाले की लीग में प्रवेश कर रहा है। इस शानदार सफर ने इंडियन ऑयल के साथ साथ हमारे देश की छवि को एक तकनीकी का इस्तेमाल करने वाले देश के बाजार एक तकनीक प्रदान करने वाला देश के रूप में बदलने में मदद की है। 50 साल की उम्र में आप अभी भी युवा हैं और आपको और बहुत आगे जाना है। आम आदमी के लिए इसकी जरूरत के अनुसार ईंधन की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के मामले में आगे का सफर नई चुनौतियों से भरा है। हमें
पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अन्य स्थायी ऊर्जा स्रोतों उपलब्ध कराने हैं और यह लक्ष्य अब भारत के खुद तय किए हैं और दुनिया को बताया है। बायोफ्यूल, सोलर विंड, हाइड्रोजन जैसे ऊर्जा स्रोतों और फ्यूल सेल, बैटरी आदि जैसे ऊर्जा भंडारण उपकरणों के क्षेत्र में किफायती स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए आप जो अनेक कदम उठाए हैं वो भारत की आत्मनिर्भर बनाने में कामगार होंगे। भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने में इंडियन ऑयल एक अहम भूमिका निभाएगा। ऊर्जा के स्रोतों में पूरे विश्व में परिवर्तन आ रहे हैं। इसके साथ ही ऊर्जा के स्रोतों को इस्तेमाल करने के तकनीकों में भी बदलाव आ रहे हैं। इंडियन ऑयल R&D को भी इस क्षेत्र में तत्पर रहते हुए संगठन में अधिक पूंजी निवेश करना होगा और मानव संसाधन को भी बढ़ावा देना होगा। भारत में काम करने की इच्छा रखने वाले विश्व भर के वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने होंगे। इस प्रकार यह अनुसंधान एवं विकास केंद्र पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में और विकास को गति प्रदान करने में सफल भूमिका निभा पाएगा। इंडियन ऑयल के विश्व प्रसिद्ध R&D संस्थान को देश के ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के मुहिम का नेतृत्व कराना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि संगठन ने इस दिशा में कई पहलों का शुरुआत कर दी है। मैं इस उपलक्ष्य पर श्री NS वैद्य जी और डॉक्टर राजकुमार जी को उनके इस संस्थान के कुशल नेतृत्व पर बधाई देता हूं। साथ ही मैं इंडियन ऑयल R&D से जुड़े हुए कर्मचारियों को भी उनके मेहनत और लगन पर बधाई देता हूं। अंत में यह दोहराना चाहता हूं कि यह 50 वर्ष सफर की शुरुआत मात्र है। आइए हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में भरपूर योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। मित्रों, आज मुझे आप सभी लोगों के साथ ये बात साझा करते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि इंडियन ऑयल R&D के 50 वर्षों के इस भव्य समापन के इस शुभ अवसर पर हम कह सकते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि एक नई शुरुआत हो रही है, तो इस नई शुरुआत से जुड़ते हुए एक कस्टमाइज्ड माई स्टैंप जारी किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली सर्कल मिस मंजू कुमार। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप इसकी फर्स्ट एल्बम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करें और आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वी वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस फर्स्ट एल्बम टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी। और इस ऐतिहासिक क्षण में ऑनरेबल MOS भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट एल्बम। आप सभी की जोरदार तालियां हो जाए प्लीज इसके अनावरण के लिए। कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प और इसका पहला एल्बम यहां पर भेंट किया गया, जिसका अनावरण स्वयं माननीय मंत्री जी ने अपने शुभ हाथों से किया है। धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें जिनके चेहरे की चमक उनके स्वाभिमान का परिचय दे रही है और आज इंडियन ऑयल की इस अनंत परिकाष्ठा की जो परिभाषा है वो पूरी तरह से इनके प्रताप और इनके आशीष से संपन्न हो रही है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा श्री हरदीप सिंह पुरी जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी राज्य मंत्री श्री रमेश्वर तेली जी, पद्म विभूषण डॉक्टर R.A. माशेलकर जी, पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर जी, मेरे मंत्रालय में सचिव श्री पंकज जैन जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल
Delhi region, Manju Kumar ji, IOCL के अध्यक्ष चेयरमैन श्री श्रीकांत माधव वाद्या जी, Dr. Ram Kumar ji, dignitaries from IOCL, industry executives, and members of the media. My colleague Rameshwar Teli ji, whilst addressing all of you, referred to IOCL, I think, as a young company. India is a 7,000-year-old civilization, but we are only a 75-year-old country. So I was asking my friend and colleague, Pankaj, I said, what does that make us as a country? And he put it very well. He said, India is just about 1% of our civilizational values. Now that is for a country, because India is achieving greatness, and we are growing from 75, as the Honorable Prime Minister says, by the time we are 100 in 2047, we will hopefully have registered progress which no other country would have registered in so short a period of time, in spite of all the developmental challenges. When an individual hits 50, there are physical, anatomical issues, but I still think 50 is just a figure, and one is at the height of one's vitality. I can say that with confidence because I'm way past 50. But I can tell you that what IOCL has achieved in the span of 50 years, I'm not talking about your economic progress. I'm coming to another aspect. When I see Dr. Mashelkar, I had the privilege of getting to know him, working with him in one of the most instructive and productive periods of my professional life. Because intellectual property is something that is the real wealth of the country. And you had glittering success in developing consumer-focused products, high-performance fuels, mini LPG cylinders, world-class automobile lubricants, automation of retail outlets, LPG distributorships, etc. But I think anyone who has even a nodding acquaintance with what commercial entities can do in terms of producing and then providing intellectual property protection, patents. 53, you have developed and commercialized 53 indigenous technologies and new products, filing more than 1,500 patents in that process. Now I think that is real progress. And I ask myself a very simple question: how many Fortune 500 companies, for that matter even research institutes, produce such high quality output in the field? And I think you have a very valid, justified sense of pride, and I congratulate you, Mr. Vaidya, and through you the IOCL family. So heartiest congratulations. You talk about a celebration of sustained success of IOCL R&D. Your colleagues have been part of this team. But I have a tendency, maybe because of my own experience of looking at technology in terms of the leapfrogging that takes place. Dr. Mashelkar used some beautiful words, pole vault. I mean, it's a height, other things. And I was just reflecting that it was not many years ago that even a gas cylinder or a gas chula was not commonly available. Even in the year 2014, when the Honorable Prime Minister assumed charge and responsibility, we had only, 14 crore gas connections? Today we have 30 crore gas connections. So one of the questions I was asking your chairman is, what is the timeline within which you can make this solar cooker, of which we had the privilege of
interacting with two very happy persons who were, that was genuine. You know, when somebody says this is easy, that is easy, there's no hesitation. Of course, I'm sorry if I provoked you into presenting it to them, but I think that's the least you can do. Okay, good. So I'm not feeling guilty on that score. It's a good investment, by the way. They're the first people to use it also get one. No, I was saying that if you can scale up the production, utilizing economies of scale, and bring the price to what I call reasonable and affordable levels, the same pride, I hope you can do it whilst I'm still minister, that instead of my having to say 14 crore connections has become 30 crores or it will become more, gas connections, I can say we started with 0 and we already have 1 crore connections. So I am just trying to provoke you into saying that you will get 1 crore of these things out into the market. I genuinely believe that this will provide a paradigmatic shift because we are moving. I mean, you know, there's a lady who said that isme khana zyada swad mata. There was an element of something which some of you would have missed. When you do the cooking on coal or on a medium like that, it hits your eyes, it permeates the etc. You move to cooking gas, it's a quantum jump improvement. But I believe when you move to solar, it will be even bigger than that because there is no even residual issue of any smell or any industrial system. So I think, I know many of my colleagues in the Council of Ministers will be delighted. Today I was in a cabinet meeting and one of my colleagues was asking, solar cooker ka kya hua? मैंने कहा लगता है कि आज उसकी demonstration होने वाली है. So I'm going to send this to him. You know which of my colleagues I mean. No, I'm really delighted that you are using your economic success without letting the eye off the innovation, product adaptation, developing technologies, and that whole and I think the number of patents, 1,500 that you filed, speaks volumes. I'm also delighted today to have with us two distinguished sons of India. Before we came here, I was recalling with Dr. Kakotkar that famous day, 11th May 1998, if I'm correct, when many of us, after a few hours in the morning when everybody in the decision-making level was missing in the government till we got the fantastic news that we had exercised an option which at least my party, the BJP, has been speaking about all along. If you read the party manifesto or Sankalp Patra then, it said that we will examine the possibility. And as a professional foreign service officer, I can tell you that was one of the proudest moments of my life when Dr. Kakotkar was at the core of it. He was a core member of the illustrious team which pioneered India's nuclear tests under Vajpayee's government. And he has played an invaluable role in India's emergence on the global geopolitical landscape as a responsible nuclear-capable nation. And today when he referred during the course of his interaction with you to clean energy, out of which nuclear energy is an option, and I thought to myself, so much of political capital was expended at that point of time. Somehow the commercial contracting to use nuclear energy, and I'm not trying to lay the blame anywhere, etc., but you know, when we look at the energy requirements of the country, we look at the fact that our global consumption of energy is 1/3. Our per capita consumption in the country is 1/3 of the global average, and the country is growing 9.2% last year, 8.5% as the base is increasing. You will need more energy. Can we look at all the clean energy options? And that is clearly the sentiment that I'm seeing. I know there were difficulties in one part of the world with reactors, etc., but I'm sure that with the kind of expertise we have here, including around this, in this hall, we should be able to look at those and see whether we can also use that as an I am personally
completely obsessed these days with the transition from the current energy mix to a sustainable green energy environment and green hydrogen, and I was delighted when Dr. Mashelkar said that they were looking at this years ago. But today, we are in the happy situation, I think, of utilizing that reflection on green energy to making it work. And even at the risk of sounding a little, I keep telling my colleagues, including my colleague who's the power minister, I said, power is very important, but it only accounts for 17% of your energy requirement. Green energy and green hydrogen will work when my friends will start using it in the refineries. And I'm very happy that work has already begun on that. We are now looking at a national policy, and whatever the target is, 750 megawatts by 2030, or even faster. I mean, I keep getting figures which we keep revising, but I think that's a road that we're all planning to go down. Let me say that Dr. Mashelkar, I served in Geneva as ambassador and permanent representative. At that stage, I was accredited to the World Intellectual Property Organization, and his contribution to that world, I think everybody knows, and I'm delighted that he's here today. He was integral in developing a framework for promoting intellectual property in the Indian scientific community. Now, Indian scientific community, I keep looking at the traditional knowledge, wealth we have here, and I think we still need to do some work to ensure that our rich traditional knowledge, Ayurveda and all those, that we can cover that in a way to make it commercially a win-win, and the Prime Minister particularly attaches the highest importance to this. Now today, clearly, we are considered a global hub of scientific activity, and not just IOCL R&D, but also industry leaders here are looking to take the next leap and commit resources to building a thriving R&D ecosystem in India's energy sector. So therefore, I'm sure that your example, and I see all my other colleagues and friends, the CMDs of the oil companies, that they will use that, because I believe this is a reservoir of both economic resource and talent, which in many ways is unparalleled in the world. Because we had developmental challenges, we overcame those. Today we are, I believe, insofar as energy is involved, India will be the critical driver of demand in the coming decades. Why? Because even as the world is talking about green and sustainable energy, the fact of the matter is that at least for the next 3 decades, if not more, we will be dependent on current, energy, etc. And therefore, any changes that you can make, any innovation, any adaptation, all that will go a very long way. This period of transition clearly is an opportunity as much as it is an imperative. When I cite figures like how many people go to a bunk every day, petrol pump to fill energy, what is it, 6 crores? People are shocked. 6 crore people go to fill up energy. And thereby hangs both a reflection of what is going on, but also a tremendous challenge and opportunity. Because you can see there that how much you can do with those resources that you have, both in terms of energy security, the making it available at affordable prices. I know the world is today characterized by, I wouldn't say uncertainty is too mild a word, by turmoil, but you are there everywhere. Now you have offices all over the world. You can look at what energy opportunities present themselves, and I have absolutely no doubt that our friends and colleagues in the energy sector, oil sector, will take full advantage of what is available in the world. I want to just come back to the intellectual property part for a minute, because I think some of these figures are very impressive. 28,000 patents were granted last year against 4,000 patents in 2014. Now, if you look at 2014 to 2022, the jump from 4,000 to 28,000. 2.5 lakh trademarks were registered in 2021 as against 70,000 trademarks in 2013 and 14. Again, that's a 3.5 times jump.
42 startups reached unicorn status last year, that is in 1 year. Before 2014, the average was 1 unicorn a year. Last night, I was with one of those unicorns in a small discussion, etc. And I wondered to myself how people who you would never have imagined can do such innovative work, and now that number is multiplying. Therefore, all I can say is that much of this is due to the very encouraging and facilitatory economic environment which the Honorable Prime Minister's policies, including Made in India, Startup India, Atal Innovation Mission, and incentivization of multidisciplinary research, such as drones, for instance. I was Civil Aviation Minister when we were facing all kinds of difficulties. One day, the Honorable Prime Minister decided that we were not only going to deal with drones and have drones, but we will become a global center for development, research, etc. And the rest is history. You saw what happened recently when the entire sky was lit up on 26 January with drones. So once again, I'm personally delighted to be joining you on this Jubilee 50 years. As I said, in the life of a company, is still a very small, because the company is destined to do great things. Heartiest congratulations to all of you, and I hope I have provoked you into making sure that the solar cooker is going to reach scales which are going to make it available to all our consumers within a reasonable period of time. Once again, thank you very much, and heartiest congratulations. Thank you so much, sir. आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And along with that, I would like to thank you as well, the beautiful audience, because as I grew up, I have learned कि कद बढ़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाइयाँ मिलती है सिर झुकाने से. तो आप सभी के आगे मैं सिर झुकाती हूँ, और इसके साथ ही सिर झुकाती हूँ हमारे गणमान्य अतिथियों के आगे, जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त, इतना बहुमूल्य समय हमें दिया. और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय जी से कि आप कृपा करके अपने शुभ हाथों से टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जो कि फर्स्ट फ्लोर पे लगी है, उसका आप उद्घाटन जरूर करें. आत्मनिर्भर भारत को दृढ़ करते हुए ये टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडियन ऑयल R&D ने लगाई है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इनॉग्रेट इट with along with the dignitaries over here on the dais. सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग जरूर फर्स्ट फ्लोर पे उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करें. आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी मंचासीन गणों का. मंच के समक्ष बैठे सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगी, आप अपने स्थान पर बने रहें, और प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद आप लोग प्रदर्शनी जरूर देखें, और साथ में आप सभी के लिए जलपान का प्रबंध भी किया गया है, तो उसका लुत्फ भी जरूर उठाइएगा. शिल्पा भावना आप सभी से इजाजत चाहती है. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.